Yes, good evening, Ash. Good evening, Kiran, Harsh, Jainam, Usman, Kiran. Very good. Yes, good morning, good morning. Yeah. So, before starting the session, I hope you all have revised what we have discussed yesterday. That is about the ilium bone, right? The hip bone is having three parts, beta. The hip bone, it is having three parts, and you are very well aware that it consists of the ilium. Yes, it consists of the ilium. Yes, we have the pubis and the ischium. The pubis and the ischium. I have already discussed about the ilium part yesterday. So I will be focusing my discussion today on ischium and pubis. So before starting with the session, just give me a thumbs up, beta. Dhanashri, beta, good afternoon. Good afternoon, beta. Welcome to the session. Yes. So just give me a thumbs up in the chat box if the audio and visuals are perfectly fine. If the audio and visuals are perfectly fine, just give me a thumbs up in the chat box. Yes, Harsh, very good. Jairam, very good, beta. Very good, Kiran, very good. Chale. So let's start with the session, beta. Let's start with the session. So we are very well aware that now, can anyone tell me which view is this, beta? Which view is this? ये मैंने कल भी बताया था. Which view is this that is marked with A? And which view is this which is marked with B? चलिए फटाफट से थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं. ऑप क्रिएटर, वेरी गुड बेटा. ओसामा, गुड आफ्टरनून बेटा. यस बेटा, ए मीडियल नहीं हो सकता. ए मीडियल नहीं हो सकता. यस बेटा. बेटा मैंने बताया था ilium, it is the superior expanded part. Okay, when I say superior expanded, ऊपर की तरफ है, expanded part है. Yes, यू आर सो मच कंफ्यूज्ड उस्मान बेटा, तुमने रिवाइज नहीं किया है कल. सुपीरियर एक्सपैंडेड पार्ट. ओके. प्यूबिस, इट इज द एंटीरो inferior part. Antero inferior part. Yes, and ischium, it is the posterior inferior part. Posterior inferior part. So beta, you already know that this is the lateral view. Yes, this is the lateral view, the A, and the B is, yes, every yes, Harsh, you are right beta. Yes, B, it is the medial view. B, it is the medial view. Medial view बेटा, मैंने आप लोग को पहले भी पिक्चर दिखाई थी. इवन आई डोंट नीड टू शो इट अगेन बेटा. ये देखो, ये इलियाक फोसा है ना, ये इलियाक फोसा है. ठीक है. और ये बॉडी का मिड लाइन है. ये बॉडी का मिड लाइन है. ऑब्वियसली यू गाइस नो दैट दिस इज द सेक्रम. ओके, और द सैक्रल वर्टिब्रा. नीचे कॉकिक्स है, राइट. तो ये जो सरफेस है विच इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, तो वो मीडियल हो गया. और इसका अपोजिट वाला सरफेस जो बेटा बाहर की तरफ निकला हुआ है, विच आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो ओवर हियर, दिस इज द लेटरल सरफेस. दिस इज द लेटरल सरफेस, राइट. तो मीडियल वाला तो ये है ना, मीडियल वाला तो ये है. यू आर वेरी वेल अवेयर कि ये जो पीछे वाला जो पार्ट है ये किससे अटैच्ड है? दैट इज द सेक्रम बोन. तो ये वाला पार्ट आप खुद भी देख सकते हैं बेटा, दैट इज अटैच्ड विद द सेक्रम बोन, राइट. दिस इज अटैच्ड विद द सेक्रम बोन, है ना. और yes, everyone is right. So yeah, that is the lateral and the medial view. Okay, now before starting, I want everyone to answer this question. What is this beta? What is this that I have marked with A? What is this which I have marked with B? चलो जल्दी जल्दी से बताओ. What is A? What is B? चलो शॉर्ट में ही बता दो, मुझे पता चल जाएगा तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है, क्योंकि I have already discussed about the ilium bone, and हम लोग हमेशा एंटीरियर टू पोस्टीरियर जा रहे हैं. एंटीरियर टू पोस्टीरियर जा रहे हैं इन द लेटरल व्यू. यस, एंटीरियर टू पोस्टीरियर जा रहे हैं. ए, यस, ए तो बेटा ASIF है. इलिया क्रेस्ट बेटा इसके ऊपर वाला ये पूरा बॉर्डर हो जाता है ना. क्रेस्ट का मतलब क्या होता है बेटा? थिकेंड बॉर्डर. जो बॉर्डर बहुत ज्यादा थिक है, तो ये तो इलिया क्रेस्ट हो गया. ये इलियाक क्रेस्ट हो गया बेटा, राइट. ए क्या हो जाएगा? एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन. देखो आगे की तरफ है ना. एंटीरियर का मतलब क्या होता है?
जो चीज फ्रंट में है, पोस्टीरियर जो चीज बैक में है, तो ये इस तरीके से लोकेटेड है, आगे से पीछे की तरफ। एंटीरियर सुपीरियर ईलियाक स्पाइन, बी क्या हो जाएगा, एंटीरियर इंफीरियर, उससे नीचे ये सुपीरियर बोल रहे हैं तो इसको इंफीरियर बोलेंगे, दोनों आगे की तरफ है, दोनों एंटीरियर है, तो एंटीरियर सुपीरियर किस बोन का पार्ट है, इलियम, इलियाक स्पाइन, स्पाइन इज लाइक अ पॉइंट लाइक प्रोजेक्शन, पॉइंट लाइक प्रोजेक्शन, तो ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, एंटीरियर इंफीरियर इलियाक स्पाइन। चलो ये वाले का नाम क्या हो जाएगा, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन, और ये वाले का नाम क्या हो जाएगा, पोस्टीरियर इंफीरियर इलियाक स्पाइन। बहुत इजी है क्योंकि दोनों ही पोस्टीरियर साइड पे, दोनों ही पीछे की तरफ है, ठीक है, दोनों ही, एक सुपीरियर है एक इंफीरियर है, कंपैरिजन करो, एक ऊपर है एक नीचे है, सुपीरियर इंफीरियर दोनों ही किसका पार्ट है, इलियम का पार्ट है, तो क्या हो जाएगा, इलियाक स्पाइन, क्या हो जाएगा, इलियाक स्पाइन। सो यू आर वेरी वेल अवेयर, वी हैव इंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन, इंटीरियर इंफीरियर, और ऊपर वाले बॉर्डर को हम लोग सुपीरियर बॉर्डर बोलते हैं, सुपीरियर बॉर्डर बोलते हैं, और सुपीरियर बॉर्डर को स्पेशल नेम दिया जाता है, दैट इज इलियाक क्रेस्ट। एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन से जो बॉर्डर शुरू होता है, दैट इज एंडिंग टू द एसिटाबुलम, इसको एंटीरियर बॉर्डर बोलते हैं क्योंकि ये आगे की तरफ है, और पीछे वाला जो बॉर्डर, it is starting from the posterior superior iliac spine and ending to form the notch। अच्छा इस नॉच का नाम बता दो, फटाफट से इस नॉच का नाम बता दो जल्दी से, which I marked क्वेश्चन मार्क, जिस पे क्वेश्चन मार्क लगाया है, यस फटाफट से इस नोच का नाम बता दीजिए जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर। यस हर्ष, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, इट इज द ग्रेटर शियाटिक नॉच, इट इज द ग्रेटर शियाटिक नॉच, greater sciatic notch। So you already know the greater sciatic notch is located on which border beta, the greater sciatic notch, it is formed by which border। चलो ये भी आंसर दे दो, यस उसामा उस्मान कृति किरण, वेरी गुड हर्ष, वेरी गुड। नाउ ग्रेटर sciatic notch it is formed by which border beta, फटाफट से बताइए, यस कृति वेरी गुड, it is formed by the posterior border only, it is formed by the posterior border only, it is formed by the posterior border only। So yes, you have already, I have discussed the borders, okay, the spines. Again, I have told you it is the acetabulum. It is the acetabulum. Yes. So you can see this Y-shaped cartilage beta. It ossifies in puberty, like approx 9 to 10 years. Yeah, it ossifies and like fuses to form a single bone. Yes, this is a Y-shaped cartilage, this is a Y-shaped cartilage, I hope everyone can appreciate this is a Y-shaped cartilage, this acetabulum, okay, 2/5 part it is formed by the ilium, okay, 1/5 part of the acetabulum it is formed by which bone, tell me beta, which bone is this red one, 1/5 part of the acetabulum it is formed by which bone, and 2/5 part again it is formed by which bone, which is this blue color bone beta, yes. Yes Chirag, very good, Chirag Lilwani, very good beta, it is the pubis bone, Jainam Kriti Osama, very good beta, it is 1/5, it is the pubic bone beta, it is the pubic bone which forms 1/5 of the acetabulum, and 2/5 again it is formed by the 2/5 again it is formed by the ischium, 2/5 it is again formed by the ischium. So you already know from the basic knowledge beta, from the basic knowledge, okay, now yes everyone is right, ischium 2/5 banayega। So you are very well aware with the fact कि we have to discuss now two bones, we have to focus our discussion on the ischium and pubis, ilium already I have discussed, okay, so let us now start with the ischium, okay, the ischium bone। So I hope everyone is ready with the notes, with registers, the colored pens and everything। yes just give me a thumbs up बेटा कि कल का थोड़ा बहुत रिवीजन हो गया है, तो सारा तो अभी इतना टाइम नहीं है कि सारा कराएं, बट हाँ रिवीजन में जितना हो सकता है जस्ट डन इट। चलो very good Kriti, very good, let us start with the ischium beta, let us start with the ischium। again I will ask you guys to make a flow chart, okay, again I will ask you guys to make a flow chart, I will draw the flow chart over here, okay, I will try to draw the flow chart over here, and I will show you the image there beta, because क्योंकि मैं साथ साथ लिखूंगा तो again there will be a mess, और यहीं पे लिख दूं या तो चलो let me just draw it on the other side, it will be like more good। now beta ischium,
Now, ischium beta, you already know ischium, it is located anteriorly or posteriorly. आप मुझे ये बताइए ischium जो है it is located anteriorly or posteriorly in the normal anatomical position. Tell me guys, you guys are going to answer me this question. I have like answered a number of times beta to you people. ischium आगे की तरफ है या पीछे की तरफ है? ऑब्वियस सी बात है बेटा, अगर आप देखोगे yes, if you can see this image beta, if you can very well see this image, so yes, it is the posterior. Yes, Chirag, Kriti, Osama, Kiran, Ash, Usman, very good. Harsh, Jainam, very good बेटा. बेटा ये एंटीरियर पार्ट हो गया, ये एंटीरियर पार्ट हो गया, और ये क्या हो गया हमारा पोस्टीरियर पार्ट, राइट? बॉडी का ये एंटीरियर हो गया ना, दिख रहा है ना बॉडी का, और ये पीछे ग्लूटियल वाला पार्ट आ गया, हिप वाला पार्ट आ गया. तो यू ऑलरेडी नो कि ये बोन कौन सी है. यस, इट इज द इलियम. देख रहे हो, ये एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन है, एंटीरियर इंफीरियर इलियाक स्पाइन है, ये पोस्टीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन है, पोस्टीरियर इंफीरियर इलियाक स्पाइन है. क्यों पोस्टीरियर बोल रहे हैं? क्योंकि बॉडी के पीछे है, पोस्टीरियर पीछे है. ठीक है. नाउ बेटा इफ वी कम टू, यस, इफ वी कम टू दिस पार्ट बेटा, दिस इज द इश्कियम, दिस इज द इश्कियम पार्ट, दिस इज द इश्कियम पार्ट. और आगे की तरफ क्या होता है? प्यूबिस. आगे की तरफ क्या होता है बेटा? प्यूबिस. आगे की तरफ क्या होगा? प्यूबिस होगा. तो इश्कियम, अब इश्कियम इज इंफीरियरली एज कंपेयर टू इलियम. इलियम ऊपर की तरफ है, तो इश्कियम आई कैन इजिली से इट इज द it is located posteriorly and it is located inferiorly. It is located posteriorly and it is located inferiorly. So remember beta, the first point that I will add in my flow chart, remember it is posterior inferior part. Yes, it is the posterior inferior part, right? It is the posterior inferior part. Okay. Yes. And okay, now and it is comprised of majorly two parts. Okay, it is comprised majorly of two parts, right? So yes, now we have two parts of the ischium. We have two parts of the ischium. I will show you one by one. I will show you one by one. The very first part, it is called as the body of the ischium. It is called as the body of the ischium. And the other part, it is called as the ramus. Ramus. रैमस का मतलब बेटा आर्म्स होते हैं. ठीक है, आर्म्स होते हैं. ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में यू कैन सी द अपर लिम, ये अपर लिम हैंगिंग है, इसी तरीके से एक रैमस होता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ द बोन. ओके, दैट इज लाइक द आर्म्स ऑफ द बोन. ओके, उसको आर्म्स बोलते हैं बोन का, रैमस. ओके, सो यस, रिमेंबर गाइस, नाउ व्हाट इज द बॉडी पार्ट एंड व्हाट इज द या रैमस पार्ट. पहले उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं बेटा. देखो, यू ऑलरेडी नो, yes, it is the ramus which is forming. Okay, yes, this is, yes, this is the body of the ramus. Okay, this is the body of the ramus which I'm highlighting beta, which I'm highlighting over here. You can see it over here. This is the body of the ramus. Okay, this whole, it is the body of the ramus. And this one beta, this one, okay, this part which I am like shading right now, this is called as the ramus of the ischium. This is called as the ramus of the ischium. This is called as the ramus of the ischium. Okay, so I hope you are clear with the body and the ramus part. Okay, the ischium is basically composed of the long part. Okay, that is the body. It is continuation in with it is continuation of, like, it is continuing with the ilium part, right? And the ramus beta, it is in continuation with the ramus of which bone? It is continuation in the ramus of which bone beta? Which bone is this that I am marking over here? Question mark. Yes, फटाफट से इस बोन का नाम बताओ, कौन सा पार्ट है ये? So ramus of the ischium, you already know the ischium, it is composed of the body and the ramus. Yes, very good. Yes, everyone is right. Harsh, Chainam, Kriti, Osama, Usman, Kiran, very good. It is the pubis bone beta. It is the pubis bone. It is the pubis bone. So this ramus of the ischium is in continuation with the pubis bone. तो इतना समझ में आ गया सब लोगों को कि ये बॉडी पार्ट होता है, और बॉडी में अब क्या क्या पार्ट्स होते हैं, अब वो अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, वो अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे.
So remember beta, we have, yes, we have two ends in the body. Okay, we have two ends. Okay, we have two ends. Try to draw this flowchart along with me. Try to draw this flowchart along with me. These two ends, beta, these two ends, I will tell you, yes, we have the upper end of the body. Yes, the upper end of the body, and we have the lower end of the body. The superior and the inferior end. Upper का मतलब ऊपर, lower का मतलब नीचे होता है. Yes. Now if we just try to look at the picture beta, if we just try to look at the picture beta, if you can clearly see beta, now this beta which I'm marking with the red color, or let me use highlighter so that it's like way clear to you people, that this is the upper end of the body. This is the upper end of the body. Okay, it is the upper end of the body. Yes, you can see this upper end of the body. And now beta, now beta, you already know the directions. You already know the direction कि ये anterior है. This side is anterior, this side is posterior, and this is the lateral view. This is the lateral view. मतलब हम लोग साइड से देख रहे हैं, right? हम लोग साइड से देख रहे हैं. Now beta, it is forming 2/5 of the acetabulum. Okay, this upper, um, yeah, the upper end. Okay, if you can see the upper end, it is forming the 2/5 of the acetabulum. Okay, it is forming the 2/5 of the acetabulum. So, can anyone tell me? Yes, can anyone tell me? Yeah, I want everyone to tell me कि 2/5 of the acetabulum, it is anterior or posterior? 2/5 of the acetabulum, it is anterior or posterior? चलो फटाफट से बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कुछ नहीं जा रहा है इसमें. उस्मान, वेरी गुड बेटा, इट इज पोस्टीरियर. ऑब्वियस सी बात है कि ये पूरा का पूरा एसिटाबुलम है. 1/5 पार्ट जो है एसिटाबुलम का वो आगे की तरफ है, एंड दैट इज फॉर्म्ड बाय द प्यूबिस. That is formed by the pubis. 2/5 part which is above. Yes, everyone is right. Everyone is right. Harish Chanama Samakriti. Very good. Miracles. Very good. 2/5 part जो ऊपर की तरफ है, the superior part of the acetabulum, it is formed by the ilium, and 2/5 part which is posteriorly. Okay, it is formed. Okay, it is like in the continuation of the upper end. It is the continuation of the upper end. So remember, beta, the upper end. The upper end, it forms. Okay, it forms 2/5. Okay, or I can simply say posterior 2/5 to be very specific beta, वो posterior है acetabulum का. Okay, so it forms posterior 2/5 of acetabulum. It forms posterior 2/5 of acetabulum. It forms posterior 2/5 of the acetabulum. Now coming on to the lower end beta, coming on to the lower end. Okay. Now beta, remember, yes, if we specifically talk about the lower end, if we specifically talk about the lower end beta, so yeah, let me just, yeah, the lower end beta, it is actually, yeah, the lower end, it is giving rise to the ischial ramus. Okay, this part, the lower end, it is giving rise to the ischial ramus at an acute angle. And remember, in the lower end beta, you will encounter a tuberosity, and this tuberosity, it is called as, yes, this tuberosity, it is called as the ischial tuberosity. Okay, this is called as the ischial tuberosity, which you will find at the lower end of the body of the ramus. So this ischial tuberosity, it is given like in some books separately it has given, but it is the lower end of yeah, it is a lower end of the body of the ischium. Yes. So yes, when we say lower end beta, yeah. So remember, it gives rise to ischial ramus. Okay. It gives rise to ischial ramus.
Okay, and yeah. So yes, that is, you have to remember the ischial ramus, and obviously which I will be discussing over here, that is the tuberosity, ischial tuberosity. Okay, ischial tuberosity. Ischial tuberosity. Now, ischial tuberosity, it is a very strong piece of bone. Okay, very strong piece of bone, and remember, it forms the lower end of lower end of the body of the ischium. It forms the lower end of the body of the ischium. It forms the lower end of the body of the ischium. Okay. Now, beta, this ischial tuberosity. Okay. This ischial tuberosity. Again, this is a very, very important part, beta. This is a very, very important part. Remember, this ischial tuberosity, it is divided by, okay, it is divided by a transverse. Yes, it is divided by a transverse ridge. Now, when I say transverse ridge, it clearly means that I'm talking about the transverse line. I'm talking about the transverse line. So if you can see over here, beta, if you can see over here in this particular picture, okay, if you just want to see over here, sure. अब इसको थोड़ा सा अब ध्यान से देखते हैं बेटा. What is this ischial tuberosity? So this is the ischial tuberosity, beta. Okay, so remember, this is an ischial tuberosity which you can see over here. This is the ischial tuberosity. I hope you all are able to get this. I hope you all are able to get this ischial tuberosity. Yes, this is the ischial tuberosity. Now this ischial tuberosity, it is, yes, there is a transverse ridge. Transverse line है. Ridge का मतलब क्या होता है? Line. Ridge means line, beta. So this is the transverse line. Yes, this is the transverse line, and this transverse line divide the ischial tuberosity, okay, into two parts. Into two parts. The upper part, that is quadrangular in shape. I hope you all can see this. The upper part, which is quadrangular in shape, and the lower part, which is more or less triangular in shape, which is more or less triangular in shape. So I hope it is divided by a transverse line. Okay, it is divided by a transverse line. Yes, it is divided by a transverse line into upper quadrangular part and lower triangular part. Is this part clear up till now, बेटा? फटाफट से एक थम्स अप देके बताओ कि ये समझ में आया. It is divided into an upper quadrangular part and lower triangular part. So yes, over here you should remember we have, yes, upper quadrangular part. Yes, very good. Usman, Ash, Harsh, Jainam, Kiran, very good. Upper quadrangular part. Yes, and we have the lower triangular part. Lower triangular part. Lower triangular part. Now, if you want, you can draw this as well, beta. You are very well aware. For example, if I am drawing like this, yeah, you already know that this is, yeah, the upper quadrangular part, and yeah, we have the lower triangular part, and this is the transverse ridge. This is the transverse ridge. Okay, this is the transverse ridge. Ridge का मतलब क्या होता है? Just a simple line. Ridge का मतलब क्या होता है? Just a simple line. So yes, we have this upper quadrangular part. Okay, upper quadrangular part and the lower triangular part. Okay, I've just written in short. Now remember beta, the upper quadrangular part, it is again divided by an oblique ridge. Okay, it is again divided by an oblique ridge, and I want your
दिमाग चाहिए मुझे तुम लोगों का। इट इज अपर quadrangular part, it is again divided by this oblique ridge into two parts. Now ये वाला part will be marked as A and this part will be marked as B. Now you are going to tell me beta which one is medial and which one is lateral. You are going to tell me which one is medial and which one is lateral. चलो A और B में से medial क्या है और lateral क्या है? चलो चलो आंसर दो फटाफट, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इजी है। आप कौन सा व्यू देख रहे हो? एक जैसा आंसर टाइप करते हैं सबके सब। ओह गॉड। चलो ठीक है, सबका गलत है आंसर। मैं इसलिए ये चाह रहा था कि आप लोग को बताऊं। चलो बॉडी में देख लेते हैं। चलो बॉडी में देख लेते हैं बेटा। अगर ये इश्कियल ट्यूबरोसिटी है बेटा, तो अगर इसके दो पार्ट्स हैं तो एक पार्ट तो बाहर की तरफ है और एक पार्ट अंदर की तरफ जो जा रहा है, जो बॉडी के मिड लाइन के पास जा रहा है, तो अंदर वाला पार्ट मीडियल होगा ना। अंदर वाला पार्ट मीडियल होगा और बाहर वाला पार्ट क्या हो जाएगा? लेटरल। अब नाउ यूज योर ब्रेन्स बेटा, नाउ यूज योर ब्रेन्स। तुम लोग कैसे ये ए वाला जो पार्ट है बेटा, ए वाला जो पार्ट है ये तो बाहर की तरफ है ना निकला हुआ, और बी वाला तो अंदर की तरफ जा रहा है मीडियल साइड पे। क्या ये बात समझ में आई सब लोगों को? बेटा ये लेटरल व्यू है ना, ये तो पहले ही बाहर की तरफ है, तो ऑब्वियस सी बात है जो अंदर वाला पार्ट हो जाएगा वो मीडियल हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुई सब लोगों को? बताओ मुझे जरा जल्दी से। बताओ मुझे जल्दी से। यस। हाँ चलो, इट इज डिवाइडेड बाय ऑब्लिक रिज, इट इज डिवाइडेड बाय ऑब्लिक रिज बेटा, इट इज डिवाइडेड बाय ऑब्लिक रिज। हेलो, यस, मेरी लाइव क्लास चल रही है प्रियांशु, अभी डिस्टर्ब नहीं करो, ठीक है? हॉरिबल थिंग। Now it is divided by an oblique ridge beta. It is yeah upper quadrangular part. हाँ ठीक है, वो तो हो गया ना upper quadrangular. It is divided by an oblique ridge. Yes. Yeah, upper lateral area. Yes. We have the upper lateral area. And we have the lower medial area. The upper lateral area and the lower medial area. Okay, you can very well see. Yes, अपर वाला थोड़ा ऊपर की तरफ है, थोड़ा ऊपर की तरफ है तो अपर है, और बाहर की तरफ है तो लेटरल हो गया। नीचे वाला थोड़ा नीचे की तरफ है, पीछे वाला थोड़ा नीचे की तरफ है, एंड इट इज टुवर्ड्स द मीडियल पार्ट, सो इट इज या द लोअर मीडियल एरिया। अगेन बेटा या द लोअर ट्रायंगुलर पार्ट, इट इज डिवाइडेड बाय एन या divided by a longitudinal ridge. It is divided by a longitudinal ridge. Yes. अब ये वाला पार्ट बता दो कौन सा हो जाएगा? ऑब्वियसली बात है ये लेटरल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? मीडियल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? मीडियल। सो यस अगेन द लोअर ट्रायंगुलर पार्ट, इट इज डिवाइडेड इनटू या इट इज डिवाइडेड इनटू ऑब्लिक, कैसे बना लेना बेटा, डिवाइडेड इनटू लेटरल एरिया, ओके, एंड मीडियल एरिया। So yes, the lower triangular part beta, the lower triangular part, it is divided by
longitudinal ridge. It is divided by longitudinal ridge. Ridge का मतलब होता है लाइन, बिल्कुल सीधी लाइन. ओके, ऑब्लिक का मतलब इस तरीके से हो गया, राइट? So yes, it is divided into, yeah, we have the lateral area, and we have the medial area. We have the lateral area and we have the medial area. I hope this is clear to each one of you. क्या ये समझ में आ गया ischial tuberosity? फटाफट से एक थम्स अप दे दो कि हमें एंड समझ में आ गए और ischial tuberosity समझ में आ गई. इस ischial tuberosity में, यस, हर्ष वेरी गुड, हर्ष वेरी गुड बेटा, हर्ष वेरी गुड बेटा. जस्ट रिमेंबर बेटा कि ये एक ऑब्लिक रिच है, तो ये बाहर की तरफ आ रहा है, तो ये लेटरल पार्ट हो गया और ये या मीडियल पार्ट हो गया. और ट्रायंगल में इस तरीके से रिच बन रही है, तो ये लेटरल पार्ट हो गया और ये मीडियल पार्ट हो गया. Upper quadrangular and lower triangle, they are actually divided by a transverse line. Transverse ridge बोलते हैं इसको. ट्रांसवर्स जा रही है ना बेटा, लाइन ट्रांसवर्स जा रही है, ट्रांसवर्स रिज, transverse ridge. Okay, so we have the upper quadrangular part, yeah, and the lower triangular part, okay. Yes, I hope it's right. It's right. Miracle Sash, Kiran, Jainam, Chirag. Yes, I hope this is like done. Okay, I hope you all have drawn the diagram. I hope if everyone has drawn this particular diagram. I'm just trying to erase it. चलो, यस किरण, वेरी गुड बेटा. चलो, तो इश्कियल ट्यूबरोसिटी हो गई, ठीक है. अब इसमें मसल्स की अटैचमेंट देख लेते हैं, ठीक है. मसल्स की अटैचमेंट बेटा तुम लोगों को याद करनी है, ठीक है. या मसल्स की अटैचमेंट याद करनी है अपर लेटरल एरिया में. ओके, क्वाड्रेंगुलर पार्ट में अपर लेटरल एरिया में बेटा एक मसल अटैच होती है, दैट इज कॉल्ड एज सेमी मेम्ब्रेनस मसल. इट इज कॉल्ड एज द सेमी membranous muscle, and semi membranous muscle arises, originate करती है यहाँ से semi membranous muscle. Okay, lower medial area में बेटा it is the, yes, long head of biceps. Yes, we have the long head of the biceps plus semi tendinous muscle. Long head of biceps plus semi-tendinous muscle. Basically, they both have common origin. From the lower medial area. तो अगर मैं बात करूं इस डायग्राम में बेटा, तो यस, अगर इस डायग्राम में बात करूं तो अपर लेटरल एरिया जो है ये वाला एरिया हो गया. तो यहाँ से मसल जो ओरिजिनेट करती है, दैट इज, यस, यू कैन मार्क इन योर डायग्राम्स एज वेल. दिस इज द सेमी मेम्ब्रेनस मसल. ये सेमी मेम्ब्रेनस हो गया, ठीक है, सेमी मेम्ब्रेनस हो गया. और पीछे की तरफ बेटा द लोअर मीडियल एरिया विल गिव राइज टू, यस, वी हैव द लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स प्लस सेमी टेंडिनस मसल. I hope this is clear to each one of you. Now coming on to the the triangular area beta. Yeah, the medial part of the triangular area. Okay, the medial area, it is related to, yes, it is related to okay, pad of fat. So it is a layer of pad of fat on which we sit. Okay, like now you are sitting in your normal position. Okay, so it is the pad of fat which is attached to this medial area, the lower triangular part. And yes, the lateral area, yes, there is origin of one muscle over here, the ischial part of adductor magnus muscle. We will be discussing muscles again in detail, so obviously just now you have to mark the area from where they are originating. So no need to like going that much detail right now, but at least you should know from this area why we are studying this area, just to know that this muscle is originating from this area, right?
So I hope this is clear to each one of you. Yeah, pad of fat on which we sit, on which we sit. Yes, I hope this is clear to each one of you. Beta, just give me a thumbs up in the chat box. Just give me a thumbs up in the chat box. Chalo, very good. Harsh, Miracles, Kiran, Jainam, Ash, very good beta, very good. चलो, ये क्लियर हो गया। इश्कियल ट्यूबरोसिटी क्लियर हो गई, दो एंड्स क्लियर हो गए बॉडी के, ठीक है। अब इसकी तीन बॉर्डर्स और तीन सरफेस हैं। ओके, वी हैव थ्री बॉर्डर्स एंड थ्री सरफेस। ओके, थ्री बॉर्डर्स एंड थ्री सरफेस। या अच्छा, इसी में इश्कियल ट्यूबरोसिटी में बेटा एक चीज और याद रखनी है, एक चीज और याद रखनी है। इफ यू जस्ट वांट मी टू या like tell you over here in this picture, so remember beta, there is a ligament. Okay, there is a ligament that is attached on, yeah, there is a ligament which is, okay, attached on the medial border. Okay, the medial border, and this ligament, okay, on the medial border of the ischial tuberosity, it is giving attachment to one ligament, and that is called as the sacrotuberous ligament. It is giving attachment to a ligament that is called as the sacrotuberous ligament. And the lateral border beta, specifically if I'm just focusing on this lateral border of the ischial tuberosity, okay, so here it is origin of one muscle, origin of one muscle, and that is quadratus femoris muscle. It is quadratus femoris muscle. It is origin of one muscle that is called as the quadratus femoris muscle. That is quadratus femoris muscle. So yes, these 2 points you can like add up in your notes. You can add up in your notes. So yeah, the ischial tuberosity. Yeah, ischial tuberosity. If I'm talking about the medial border, yes, the medial border, it will give attachment to sacrotuberous ligament, the sacrotuberous ligament. Yes, the sacrotuberous ligament. And remember the border, the lateral border will give attachment, or no, it will, okay, yeah, one muscle will originate from here, and that is quadratus femoris muscle. Quadratus femoris muscle. I know the names of the muscles are little bit tough for you, but बेटा जितनी बार जल्दी जितनी बार ये आता जाएगा, the number of times I will tell you everywhere, I will be using this muscle through and throughout like the lower limb. So ये याद होता जाएगा आप लोगों को, ठीक है। अभी थोड़ी सी दिक्कत होगी, I do understand, because it is the first time that you are getting into the actual muscles and everything, the parts. So अभी सिर्फ parts पे ध्यान रखो कि हाँ, इश्कियम में हमें बॉडी पढ़ाया सर ने और रामस, बॉडी में दो एंड्स बता दिए, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है। और उसी बॉडी के लोअर एंड पर हमें एक ट्यूबरोसिटी देखने को मिलती है, दैट इज कॉल्ड एज द इश्कियल ट्यूबरोसिटी, व्हिच इज हैविंग एन अपर क्वाड्रेंगुलर एरिया एंड लोअर ट्रायंगुलर एरिया। अपर क्वाड्रेंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर, इट इज डिवाइडेड बाय अ ट्रांसवर्स रिज। अपर क्वाड्रेंगुलर इट इज डिवाइडेड बाय एन ऑब्लिक रिज। अपर लेटरल एरिया बाहर की तरफ और पीछे इंफीरियर पीछे की तरफ मीडियल एरिया, और ट्रायंगुलर एरिया इट इज डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल रिज इनटू टू पार्ट्स, राइट। Yeah, lateral बाहर की तरफ जो निकला हुआ है, and अंदर it is the middle area and the muscles attached to it, right? So I hope this is clear to each one of you. I hope this is clear to each one of you. Beta, just give me a thumbs up if it is like way clear to each one of you right now. Now coming on to the ischial tuberosity. Yeah, ischial tuberosity done. Yes. Yes, Kiran, Jainam, Ash, Harsh, very good. Very good, Peter. Now coming on to the third part of the body that we have to discuss. It is the borders. Okay, we have the three borders of, okay, the three borders of the, yeah, body of the ischium, three borders. And you guys are now going to tell me the three borders. Okay, I will mark the border for you and you are going to name that border. You are going to name that border. Okay, meanwhile you can just mention beta. Meanwhile you can just mention those borders. Yeah. Sure. Now you guys are going to tell me
ओके, चलो इस वाले पिक्चर पे मार्क करते हैं, ज्यादा इजी रहेगा। चलो ठीक है, इस वाले पिक्चर पे मार्क करते हैं एंड आई विल बी मार्किंग दीज बॉर्डर्स फॉर यू एंड यू आर गोइंग टू टेल मी द नेम ऑफ दिस बॉर्डर। ओके, कैन यू टेल मी द नेम ऑफ दिस बॉर्डर बेटा? ये फोरामेन कौन सा है? पहले तो ये फोरामेन बताओ कौन सा है, विच फोरामेन इज दिस? ये जो फोरामेन दिख रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फोरामेन गाइस? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फोरामेन? या मैंने रामस पे भी मार्क कर दिया, सो यस अप टिल हियर ओनली। चलो, yes, I want the name of this foramen. Chirag, very good beta. It is the obturator foramen. It is the obturator foramen. Okay, यहीं तक होगा क्योंकि नीचे तो ramus आ जाता है। ठीक है, you already know बेटा ये anterior side है और ये posterior side है। तो obturator foramen का ये कौन सा पार्ट बना रहा है? It is forming which part of the obturator foramen? Obturator foramen का anterior part है, posterior part है, कौन सा part है? You guys are going to tell me. Yes, कृति वेरी गुड बेटा, यही मुझे चाहिए कि तुम लोग को थोड़ा सा आइडिया हो या थोड़ा सा ओरिएंटेशन का आइडिया हो, तो चीजें ना इजी हो जाती है बेटा। देखो ये ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन हो गया, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन, ये बड़ा सा गैप जो दिख रहा है, तो इस ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन का एक हिस्सा आगे की तरफ होगा जो किससे बन रहा है? प्यूबिस से, जो प्यूबिस से बन रहा है। और पोस्टीरियर वाला जो हिस्सा है वो किससे बन रहा है? हमारा इस्कियम से। वो किससे बन रहा है? इस्कियम से बन रहा है, राइट? नाउ दिस बॉर्डर इट इज कॉल्ड एज द एंटीरियर बॉर्डर। ऑब्वियसली बात है बेटा, इस्कियम के रिस्पेक्ट में अगर इस्कियम को देखोगे तो बेटा ये बॉर्डर आगे की तरफ आ रहा है ना, ये बॉर्डर एंटीरियरली फेस कर रहा है, तो ये एंटीरियर बॉर्डर है किसका? इस्कियम का, बट इट इज फॉर्मिंग द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। इट इज फॉर्मिंग द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। क्या ये बात सबको समझ में आई? फटाफट से जल्दी से बताओ मुझे चैट बॉक्स में, क्या ये बात सबको समझ में आई? चलो जल्दी से बता दो फटाफट से चैट बॉक्स में, क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? Yes, Harsh, Kiran, very good. Ash, very good. Chirag, very good. So we have the, yeah, we have the, yeah, anterior border. Yes, we have the anterior border. Okay. So it forms the posterior part of obturator margin. Forms the posterior part of obturator margin. It forms the posterior part of the obturator margin, right? Now beta, the other border, it is the posterior border that I will show you right now. Posterior border, and we have one more border beta, that is called as the lateral border. Okay, that is called as the lateral border. Lateral border बेटा, अगर ये एंटीरियर है, अगर ये एंटीरियर है तो ऑब्वियसली बात है पोस्टीरियर बॉर्डर यही होगा, पोस्टीरियर बॉर्डर ये होगा। कैन यू सी दिस पोस्टीरियर बॉर्डर एवरीवन? I hope you can very well see this is the posterior border, right? This is the posterior border of the ischium, right? This is the posterior border of the ischium. And remember beta कि ये वाला जो नोच था वो था ग्रेटर शियाटिक नोच। ओके, यू ऑलरेडी नो इट इज द ग्रेटर शियाटिक नोच, इट इज द ग्रेटर शियाटिक नोच। ये क्या है? इश्कियल स्पाइन, इश्कियल स्पाइन। और फिर ये क्या आ जाता है? एक और नोच बन जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द लेसर शियाटिक नोच, दैट इज कॉल्ड एज द लेसर शियाटिक नोच, दैट इज कॉल्ड एज द लेसर शियाटिक नोच। तो अगर मैं पूछूं पोस्टीरियर बॉर्डर, इट इज फॉर्मिंग द लोअर पार्ट, ओके, द या द पोस्टीरियर बॉर्डर इट इज फॉर्मिंग the lower part, okay, it is in continuation with the posterior border of the iliac, okay, the ilium, okay, so it is forming the lower part of the greater sciatic notch, it is forming the ischial spine, okay, ischial bone है तो उसकी spine को नाम क्या देंगे? ischial spine. And after the ischial spine it is forming the lesser sciatic notch, after the ischial spine it is forming the lesser sciatic notch, yes. And
yeah, lesser sciatic notch. I hope this is clear to everyone. I hope this is clear to everyone over here. Yes. Yeah, we have the posterior border. Yes, I hope this is clear to everyone. Yes, Kriti, very good. Very good. So, yeah. So it continues, beta. Yeah, remember, beta, I will just write it over here. It continues with posterior border of ilium, posterior border of the ilium, right? It continues with the posterior border of the ilium, forms lower part of greater sciatic notch, forms lower part of greater sciatic notch. Yes, from lower part of the greater sciatic notch, right? Then projects to form the ischial spine. इसको ना मैं इधर लिख देता हूँ, yeah, because I don't have space over there. Yes, so I will write it over here. Then it forms the ischial spine, ischial spine. Yes, and then it forms the lesser sciatic notch, lesser sciatic notch. So yes, it forms the ischial spine and the lesser sciatic notch and the lesser sciatic notch. So yes, and yeah, beta, coming on to the lateral border. So you can very well see lateral border is not yeah, this is the lateral border, beta. If you can just see it over here, this is the lateral border. It is forming the lateral margin of the ischial tuberosity. So this is the lateral border. Okay, so this is the lateral border. It is forming the lateral margin. देखो lateral side पे है ना, बाहर की तरफ है. So this is the lateral border. Lateral border. It is forming the, ये क्या है, ischial tuberosity. Ischial ट्यूबरोसिटी है, इश्कियल ट्यूबरोसिटी है, और इश्कियल ट्यूबरोसिटी का लेटरल मार्जिन बना रहा है व्हाट, लेटरल बॉर्डर. सो रिमेंबर बेटा, या रिमेंबर बेटा, द लेटरल बॉर्डर, यस, इट इज forming lateral margin of ischial tuberosity, forming lateral margin of ischial tuberosity, ischial tuberosity, forming the lateral margin of the ischial tuberosity. I hope it's clear, beta. I hope all the borders are clear to each one of you. I hope all the borders are clear to each one of you. जल्दी से एक थम्स अप दे दो बेटा, फटाफट से एक थम्स अप दे दो चैट बॉक्स में if the borders are clear. Yes, Kiran, okay, Miracles, Harsh, Jainam, Ash, Chirag, very good. Very good, beta. Again, beta, that you have to keep in mind, again, the point that you have to keep in mind, that is the surfaces now, beta. I hope everything is like way clear to each one of you. Now coming on to the surfaces. अब surfaces के लिए मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है. So we have three surfaces which I will be projecting in the next slide. Three surfaces. If you have space, beta, just continue in the same flowchart. Just continue in the same flowchart. This is how you have to tell the examiner also. This is the presentation whenever it is in the Viva. If they have asked if the examiner have asked you to describe the ischium bones, so this is how you have to describe it, along with the your parts, the ends, tuberosity, border, surface. You have to explain from where to where it is going and what are the ligaments and the muscles which are attached over here, the ligaments and the muscles which are attached over here. Now when I say surfaces, beta, okay, or before surfaces, basically you should know we have ischial spine, beta. I have not mentioned over here, but you should mention that ischial spine, basically it contains a ligament, and over here a ligament is attached, that is the sacrospinous ligament. That is the sacrospinous ligament that is attached over the ischial spine. That is the sacrospinous ligament. Sacrospinous ligament. Chalo, sacrospinous ligament. Now, coming on to the surface, beta. We have three surfaces. So we have already discussed ischium. Okay. Ischium, we have already discussed. Yeah, ischium is divided into body and ramus. Right? Body and ramus. एक देखो, एक आपकी बॉडी होती है और बॉडी से क्या निकले हुए हैं, दीज अपर लिंग पार्ट्स, ठीक है, आर्म्स निकले हुए हैं, ठीक है. तो इसी आर्म्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रैमस, और एक क्या हो जाती है, बॉडी, ठीक है. सो यस, नाउ द बॉडी हैज two ends, right? We have already discussed, yeah, we have ischial tuberosity,
We have already discussed the three borders. Okay, the three borders. Now coming on to the three surfaces, guys. Three surfaces. So yes, we have three surfaces, beta. We have three surfaces. We have the dorsal surface, okay. We have the femoral surface, and we have the pelvic surface. Okay, we have dorsal surface, femoral surface, and the pelvic surface. Now, when I say dorsal surface, beta, the dorsal surface is the one which continues above. Okay, the dorsal surface is the one which continues above. Okay, okay. Let me just show to you the femoral surface first. The femoral surface, beta. Now, hmm. Now, let me show you the femoral surface. So you guys are very well aware that when I say femoral surface, beta, I'm talking about this particular surface. Can you like able to see this color? Okay, let me just draw this surface. This is the femoral surface. Why it is called femoral? Because it is in relation with the femur bone. It is in relation with the femur bone. Now, beta, can you tell me it is between which two borders? I want the answers from everyone. If you have like noticed it, this is the femoral surface, and you guys are going to answer me. It is between which two border? Which border is this, and which border is this? So yes, it is between which two borders? चलो आंसर दो फटाफट से चैट बॉक्स में आंसर दो जल्दी से. इट्स मिराकल वर्ल्ड. वेरी गुड बेटा कृति, वेरी गुड बेटा. ये डेटा देखो एंटीरियर ये रहा, पोस्टीरियर ये रहा. अगर ये पोस्टीरियर सरफेस है, सॉरी अगर ये पोस्टीरियर वो है क्या कहते हैं, अगर ये पोस्टीरियर बॉर्डर है तो ये लेटरल बॉर्डर है, और ये क्या है एंटीरियर, आगे की तरफ हो गया ना, आगे की तरफ फेस करे तो एंटीरियर और लेटरल बॉर्डर. यस एवरीवन इज राइट. मिराकल कृति, जयनाम किरण, वेरी गुड बेटा. इट इज एंटीरियर एंड लेटरल बॉर्डर. सो फेमोरल सरफेस व्हिच इज facing towards the femur, beta, remember it is, yeah, it lies between anterior and lateral border. It lies between anterior and lateral border. It lies between anterior and lateral border. Okay. So yes, posterior surface, yeah, posterior surface, beta. So yes, can anyone tell me where will be the posterior surface now? Now the posterior surface will be over here. Yes, so this is, so yes, this is the, yeah, posterior surface, which you can just see it is in continuation. Okay, this is the posterior surface. पीछे की तरफ हो गया posterior surface. ओके, पोस्टीरियर सरफेस, पोस्टीरियर को और क्या बोलते हैं, डॉर्सल भी बोलते हैं. पोस्टीरियर को और क्या बोला जाता है, डॉर्सल भी बोला जाता है. सो दिस इज द पोस्टीरियर सरफेस बेटा. इट कंटिन्यूज विद द gluteal surface of ilium. It continues with the gluteal surface of the ilium, and this posterior surface downwards, okay, below it projects to form the ischial tuberosity. Ischial tuberosity. तो posterior surface के ऊपर क्या प्रेजेंट है, gluteal surface. posterior surface के नीचे, I mean it is continuing downwards to form the ischial tuberosity, and above it is in continuation with the gluteal surface. So remember, posterior surface, it is also called as the dorsal surface. Okay, posterior surface or dorsal surface. So remember, it continues above. It continues above with gluteal surface of ilium. With the gluteal surface of ilium. Okay, and below it projects to form ischial tuberosity. Below it projects to form the ischial tuberosity. Right, below it projects to form the ischial tuberosity. And pelvic surface, beta. Now tell me guys, can I see pelvic surface in this view?
ये लेटरल साइड है बेटा, क्या पेल्विक सरफेस में देख सकता हूं इसमें? चलो जल्दी से बताओ, आंसर दो फटाफट से। पेल्विक सरफेस में इस व्यू में देख सकता हूं या नहीं देख सकता? यस और नो? यस और नो में भी आंसर नहीं आ रहा है, बताओ। बेटा मेरी बात सुनो, पेल्विस जो है वो इन 4 बोन से मिलकर बना हुआ है, 2 हिप बोन, सैक्रम और कॉकिक्स। 2 हिप बोन, सैक्रम और कॉकिक्स। तो बाहर वाले सरफेस पे पेल्विक सरफेस कैसे दिखा सकता हूं? पेल्विक सरफेस कहां प्रेजेंट होगा? इट विल बी ऑन विच साइड बेटा? इट विल बी ऑन विच एस्पेक्ट ऑफ द हिप बोन, मीडियल या लेटरल? पेल्विक सरफेस वो सरफेस होगा ना जो पेल्विस बना रहा है, तो पेल्विस बनाने वाला हिप बोन का कौन सा सरफेस है, मीडियल या लेटरल? टेल मी। यस कृति, इट इज द मीडियल सरफेस। अंदर वाला पार्ट बना रहा है ना बेटा पेल्विस। पेल्विस किसका बना हुआ है? पेल्विस किसका बना हुआ है? सेक्रम, कॉकिक्स और 2 हिप बोन्स। ठीक है, 2 हिप बोन्स, राइट? इट इज द मीडियल वन। यस यस, ऐश, हर्ष, मिराकल्स, जयनाम, किरण, वेरी गुड बेटा। तो ऑब्वियस सी बात है, पेल्विक सरफेस अंदर की तरफ होगा, पेल्विक सरफेस अंदर की तरफ होगा। एंड यू गाइस आर वेरी वेल अवेयर दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, यस, या, this surface beta. I'm talking about this surface. Yes, this is the pelvic surface. If you can clearly see it over here, this is the pelvic surface. Okay, this is the pelvic surface. Okay, this is the pelvic surface, and remember it is smooth and forms the lateral wall of the true pelvis. Okay, so remember the pelvic surface, it is smooth and forms lateral wall of true pelvis. Lateral wall of true pelvis. Okay. So I hope the body is done. I hope the body is done. Now coming on to the ramus part, beta. Coming on to the ramus part. Yeah, coming on to the ramus part. So you all are aware that the ramus has basically, okay, the ramus, yeah. Now I hope I have one more picture over here. Yes, if you can just see the ramus beta, the ramus is this part, the arms, okay, the arms. So this ramus beta, this ramus has basically, okay, it is, yeah, the lower end of the body of the ischium, the lower end, क्योंकि देखो ये body है और नीचे क्या है, ये ramus. ramus का मतलब क्या होता है? arms, arms है, ठीक है। now it, yeah, joins the pubic ramus, okay, to form the conjoined ischiopubic ramus, okay. So this ramus has 2 borders. एक border ऊपर की तरफ होता है और एक border नीचे की तरफ होता है. We have the upper border and we have the lower border, okay, and 2 surface बेटा, एक surface बाहर की तरफ anterior, okay, या outer surface बोल सकते हैं, और एक surface ओके पीछे की तरफ है, और आई कैन से द इनर सरफेस। देखो एक आउटर की तरफ है, फेमोरल सरफेस बोल सकते हैं, और एक इनर की तरफ है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? पेल्विस सरफेस बोलेंगे, पेल्विस सरफेस बोलेंगे, ठीक है। सो इफ यू कैन सी, या इफ यू कैन जस्ट वांट टू राइट इट, या यू कैन जस्ट राइट इट that, yeah, ramus, yeah, the ramus, it forms the lower end, the lower end, okay, yeah, it has 2 borders and 2 surface, 2 borders and 2 surface. The 2 borders are basically beta upper and lower border, upper and lower border, and 2 surfaces beta. 2 surfaces, we have the outer surface, okay, bahar wala surface, that is the femoral surface. bahar side, bahar की तरफ फीमर बोन होगी, और अंदर की तरफ क्या हो जाता है? पेल्विस पार्ट हो जाता है ना, तो पेल्विस, पेल्विस सरफेस, okay, the pelvic surface, right? I hope the ischium is clear to each one of you. I hope the ischium is clear to each one of you. In just 1 or 2 slides I've given you the whole ischium beta. In just 1 or 2 slides I've given you the whole ischium. So all the muscles, ligaments which I feel that are important, I've already mentioned it, okay. So yes, we are done with the osteology of the ischium bone, osteology of the ischium bone. Yes, Harsh, Ash, Jainam, very good, beta, very good. So before starting with the pubis, let me just take a test for you people. Let me just take a test for you people. So yes, yes, beta.
कैन यू टेल मी विच स्ट्रक्चर इज दिस, कैन यू टेल मी विच स्ट्रक्चर इज दिस, ये मैंने अभी बताया है, और मुझे फटाफट से बता दो ये कौन सा स्ट्रक्चर है विच इज मार्क्ड विद ए, ठीक है, द वन विच इज मार्क्ड विद बी, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, जल्दी से बता दो फटाफट से, टेस्ट तो लेना ही है। यस मिराकल्स, क्या ये सही बोल रही है मिराकल? यस यस कृति, वेरी गुड बेटा, इट इज द इश्कियल स्पाइन, इट इज द इश्कियल स्पाइन। ये बता दो ये सी वाला पार्ट क्या है फिर, ये क्या बना रहा है, ये तो एक नोच जैसा लग रहा है, इस नोच का नाम बता दो फटाफट से बेटा, फटाफट से। यस इश्कियल ट्यूबरोसिटी, एक कृति बेटा, रामस तो बेटा नीचे वाला पार्ट हो गया ना, रामस तो बेटा नीचे की तरफ आ गया, तो तुम ऊपर कहाँ चलेगा? हाँ इश्कियल स्पाइन है ललवानी, वेरी गुड किरण, वेरी गुड, इश्कियल स्पाइन है, बी वाला पार्ट, हाँ चिराग ललवानी, वेरी गुड बेटा, इट इज द लेसर शियाटिक नॉच, लेसर शियाटिक नॉच, एक बड़ा वाला जो ये कर्व जैसा दिख रहा है नोच जैसा, ये ग्रेटर शियाटिक नॉच हो गया, ये लेसर शियाटिक नॉच, और ये वाला पार्ट क्या है, इश्कियल स्पाइन, स्पाइन बना रहा है ना, और कौन सी बोन बना रही है, इश्कियम बना रही है। यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड, बी वाला पार्ट तो वो वाला पार्ट है, चलो ठीक है, इतना तो क्लियर हो ही गया तुम लोगों को। ठीक है, तो अब इसमें सच तो मुझे लग नहीं रहा है कुछ पूछना है तुम लोगों से। हाँ चलो फिर अब हम प्यूबिस स्टार्ट कर सकते हैं, वी कैन स्टार्ट विद द प्यूबिस बोन बेटा। नाउ प्यूबिस, अब तुम लोग मुझे बताओ कि कहाँ प्रेजेंट है, एंटीरियर इंफीरियर पोस्टीरियर, कहाँ प्रेजेंट है प्यूबिस, चलो जल्दी से बता दो प्यूबिस वेयर इट इज प्रेजेंट। चलो जल्दी से बता दो वेयर द प्यूबिस इज प्रेजेंट। चलो यस एंटीरियरली 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 इंफीरियर, एंटीरियर एंटीरियर इंफीरियर, चलो बेटा ठीक है, अब इसको थोड़ा सा इस वे में देख लेते हैं। यस चलो इस वे में देखते हैं, इस वे में देखते हैं, अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो यू ऑलरेडी नो दिस इज द iliac bone, iliac fossa, right, the ilium part, right, this is the pubis and this is the ischium, ischium, तो pubis as compared to ilium it is down, so it is inferior, or pubis it is coming in front, pubis it is coming in front, it is anterior, so it is antero inferior part, okay, आगे की तरफ है pubis bone, बिल्कुल आगे की तरफ है, you can see the right pubis and the left pubis, they are meeting each other in the midline। ये कौन सा जॉइंट बनाते हैं बेटा, इस जॉइंट का नाम बताओ फटाफट से, और टाइप भी बता दो ये कौन सा जॉइंट बनाते हैं। सो यस ये टाइप भी बता दो ये कौन सा जॉइंट बनाते हैं। सो यू गाइस शुड, यू आर वेरी वेल अवेयर दैट दिस इज द, या इफ यू कैन सी बेटा दिस इज द, यस दिस इज द प्यूबिस बोन। तो ये जितना मैं शेड कर रहा हूं बेटा, जितना मैं शेड कर रहा हूं, सो दिस इज द प्यूबिस बोन। यस आई वांट टू, या कार्टिलेजिनस जॉइंट है बट कौन सा वाला है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्यूबिक, पूरा पूरा नाम बताओ बेटा, ये है हमारा पूरा का पूरा प्यूबिक बोन, ठीक है, प्यूबिक बोन। चलो ये प्यूबिक सिम्फाइसिस जय नाम, वेरी गुड बेटा, या फाइब्रस जॉइंट है, या वेरी गुड बेटा, बिल्कुल तुम्हें याद है, चिराग मिराकल्स वर्ल्ड, वेरी गुड। तो प्यूबिस आप लोगों को पता होना चाहिए, यस प्यूबिस यू आर वेरी वेल अवेयर बेटा। when we talk about the osteology of pubis, again I will try to draw a flow chart, okay, please draw this flow chart on a single page, okay, on a single page. Now I'm taking one pubis out, I'm taking one pubis out, okay, and I will try to draw a diagram for you people as well, I will try to draw a diagram for you people as well. So let us just try to draw and see what are the parts of the pubis, what are the parts of the pubis. You already know, yes, you already know we have the anterior superior iliac spine, yeah, anterior inferior iliac spine, yes. Then you already know it is like continuing with the pectineal line, yeah, and yes, we have the posterior superior iliac spine, yes. Then posterior inferior iliac spine, then we have the greater sciatic notch, the lesser one, and yes, I'm like not focusing on the that part again.
So yes, I am now concerned, beta. I am now concerned about this particular part, that is the pubis part. Okay, that is the pubis part. That is the pubis part, right? So now, beta, you already know we have this Y-shaped cartilage. I'll just draw it with another color. So yes, we have this. hmm, So this part, it is the pubis. Okay, this part, it is the pubis. Okay, which you want me to highlight, I can do that. Yes, this is the pubis part. So yes, I'm just trying to draw it in 1D, and I will tell you better. I'm just trying to draw it in 1D, and I will just try to show you how the things actually work. Okay, so the pubis bone, beta. Remember the pubis bone. It is having two parts. Okay, it is having two parts. Yes, it is having two parts. We have the body of the pubis, the body of the pubis, and yeah, the body of the pubis and the ramus and the ramus, two ramus of the pubis. Okay, we have the body of the pubis and two ramus of the pubis. Right now, you can all see over here, beta. If I just want to show it in the picture, I have. Okay. Yes, in this picture I will be showing. Okay. Now let us now look at the body and the yeah. Let us now look at the body and the ramus of the pubis. So yes, beta. Just try to see this picture. Just try to see this picture. You already know I'm just talking about the pubis bone. So yes, sure. I hope this is clear to everyone. I hope this is clear to everyone. Yeah, beta. I hope this is clear to everyone. Yes, beta. So this is the body of the pubis. Okay, this is the body of the pubis, which I am drawing right now. You can see the two bodies of the pubis. This is the body. This is the body. Now, this is the one which I'm drawing, or like in darker part, it is the inferior ramus. It is the inferior ramus, right? And the one over here, beta, the one over here which is in continuation with the body. Okay, the one over here which is in continuation of the body, it is the superior ramus. It is the superior ramus. It is the superior ramus, right? So we have two bodies. The body, okay, two ramus. The body of the pubis is in. It is a connecting link between the superior ramus and the inferior ramus. I can say that. So yeah, body is basically connected to the superior ramus. Also, you can see the superior ramus. I'm just trying to highlight this. This is the superior ramus, beta. Okay, which is in continuation with the pelvic surface of the iliac bone, and we have the inferior ramus, beta. We have the inferior ramus, and yes, the one which I'm highlighting with green, that is the body of the pubis. The body of the pubis. So we have the superior ramus. Okay, body है और उसके दो arms, एक ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है. So I hope this particular part is clear to each one of you. बेटा जल्दी से एक thumbs up दो. जल्दी से एक thumbs up दे दो chat box में. चलो, अगर ये पार्ट समझ में आ गया तो पहले बॉडी को डिस्कस कर लेते हैं. तो पहले बॉडी को डिस्कस कर लेते हैं. यस, एश शी इज ओके. ओके, शी इज डन. ओके. हाँ. हम्म. तो यस,
Now, the body of the pubis, yes, it is flat. It is flattened. Okay, the body of the pubis is flattened. Okay, it has one border and three surface. It has one border and three surface. It has one border and three surface. Right? Now, beta, one border. Okay, if you want to highlight the body part, beta, if it is like, okay, let me just highlight the body over here. So yes, this is the body part. Now, I'm just trying to show it in 1D beta that the body is containing one border, and that border, okay, which I am highlighting in dark, it is called as the superior border. Okay, it is called as the superior border. Okay, it is called as the superior border. Okay, or I can also say it as the upper border, superior border, or upper border, or I can say it as the pubic crest. The pubic crest. नाउ क्रेस्ट का मतलब क्या होता है बेटा, एक सिंपल लाइन होती है, ठीक है, लाइन होती है, इसी लाइन को अगर थिक कर दो तो बॉर्डर हो जाएगी, और इसी बॉर्डर को और ज्यादा थिक कर दो तो ये क्या हो जाता है, क्रेस्ट, ये क्या हो जाता है, क्रेस्ट. सो आई कैन सिंपली से दैट द सुपीरियर बॉर्डर, okay, it is thick and it is called as the pubic crest. Okay, it is pubic crest. अब आपको पता है कि, okay, if you already know that this is the midline of the body, okay, if suppose this is the midline of the body, so yeah, this is the midline. You already know the pubic bone, both the pubic bones from the right and the left part, they are meeting in the midline, they are meeting in the midline. So this superior border, it is going laterally. Okay, it is going laterally and it is forming a tubercle. It is forming a tubercle, and that tubercle, it is called as the pubic tubercle. So it is pubic crest which ends laterally, which ends laterally, okay, by pubic tubercle. Okay, by pubic tubercle. Tubercle का मतलब होता है small rounded projection of the bone, the small rounded projection of the bone. Okay, the small rounded, for example बेटा अगर ये सिंपल सी लाइन है, ठीक है, और इसी लाइन पे अगर एक स्मॉल राउंडेड प्रोजेक्शन देखने को मिल जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूबरकल. इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्यूबरकल. इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्यूबरकल. इतना क्लियर है सब लोगों को, इतना क्लियर है सब लोगों को. तो प्यूबिक क्रेस्ट है, दैट इज द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द बॉडी ऑफ द प्यूबिस, एंड वी हैव द प्यूबिक ट्यूबरकल. वी हैव द प्यूबिक ट्यूबरकल. यस हर्ष, वेरी गुड बेटा. इफ यू वांट आई कैन जस्ट या, चलो ये क्लियर हो गया ना सब लोगों को, ठीक है. चलो वेरी गुड किरण, वेरी गुड. व्हाट अबाउट रेस्ट बेटा, व्हाट अबाउट रेस्ट, फटाफट से बाकी आंसर्स तो जल्दी से. चलो yes, Jainam, very good beta. Jainam, very good. So you can very well see over here beta, just wanted to, yeah, so this is the body part, and like, yeah, we have the superior part, which is like forming a tubercle. Yes, miracles world, very good. So beta, over here the muscle attachments are very important. The muscle attachments are very important. The pubic crest, beta, it, one muscle is basically originating over here. It is rectus abdominis. Rectus का मतलब होता है straight. Okay, rectus abdominis muscle is originating, and beta remember, from this upper border only the rectus abdominis muscle will be originating, and there is one more muscle, that is pyramidalis. That is pyramidalis muscle, rectus abdominis muscle.
and pyramidalis muscle. They both are originating from the pubic crest. They both are originating from the pubic crest. And yes, from the pubic tubercle, we have basically one, yeah, one ligament that you have to remember and one muscle. From the pubic tubercle, we have cremastric muscle, cremastric muscle that is originating over here. Yeah, and remember, beta, we have inguinal ligament. We have inguinal ligament. Inguinal ligament. So pubic crest, we have rectus abdominis muscle and the pyramidalis muscle, and the pubic tubercle, we have the cremastric muscle and the inguinal ligament. Okay, the pubic tubercle. Yes. Now, beta, coming on to the three surface. Okay, the body has three surface, and that three surface you just have to remember. Yeah, the three surface, we have anterior surface, we have anterior surface. Okay, we have, yes, posterior surface, posterior surface, or it is also called as the pelvic surface. And yes, lastly we have the medial or symphysial surface, symphysial surface. So remember beta, we have three surface. Okay, anterior surface, beta, anterior मतलब जो आगे की तरफ है, जो आगे की तरफ आपको दिख रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीरियर सरफेस, एंटीरियर सरफेस विच इज इन फ्रंट. ओके, फिर आ जाएगा ये मीडियल सरफेस, मीडियल सरफेस, मीडियल सरफेस बेटा. नाउ एंटीरियर सरफेस, मीडियल सरफेस, और एक सरफेस पीछे की तरफ होगा इसके, दैट इज टुवर्ड्स द पेल्विस पार्ट, दैट इज टुवर्ड्स द पेल्विस पार्ट, तो उसको पेल्विक सरफेस बोलते हैं. अंदर की कैविटी होगी ना, पेल्विक कैविटी, तो पीछे वाला सरफेस वो पेल्विस की तरफ है, आगे वाला आगे की तरफ है, और बीच में वो जॉइंट बना रहा है. तो आई वांट योर आंसर्स बेटा, I want you people to answer me which surface will form the pubic symphysis. Which surface will form the pubic symphysis? चलो आंसर दो इसका फटाफट से. Which surface will form the pubic symphysis? Medial, medial, very good beta. Jainam, very good. Miracle Kriti, very good beta. Yes, we have three surfaces beta. So remember the medial or the symphysial surface. Okay, it will form the joint wala part. Yeah, the pelvic surface you already know. Yeah, the pelvic surface you are already aware. And yeah, anterior surface beta, you have to remember one muscle over here. Yeah, we have one muscle. Yeah, yeah, that muscle beta, it is adductor longus muscle. It is adductor longus muscle. Remember beta, this muscle is just below the pubic tubercle. It is just below. Yeah, it is just below over here on the anterior surface only. It is just below the pubic tubercle. Okay, just below the pubic tubercle, and below adductor magnus, and below adductor magnus there is one more muscle. Yeah, that is adductor brevis. Magnus का मतलब होता है बड़ा, और brevis का मतलब क्या होता है, short. Okay, long or short. Magnus means बड़ा, and just below it, and just below it we have adductor, yeah, adductor brevis muscle, adductor brevis muscle, adductor brevis muscle. So yes, adductor brevis muscle. इतना क्लियर है, बॉडी क्लियर हो गई सब लोगों को, बॉडी इज क्लियर. medial surface, it basically forms the joint, pubic symphysis. बॉडी क्लियर है, फटाफट से एक थम्स अप दे दो चैट बॉक्स में, if the body is clear to each one of you, if the body is clear to each one of you. Yeah, Jainam says okay, 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 okay. Yeah, very good beta, very good. Ash miracles, very good beta. बहुत धीरे धीरे करा रहा हूं बेटा, because I personally believe कि you should be like, yeah,
Now beta, coming on to the Ramos wala part. Okay, so yes, I have this particular slide left. Okay, now coming on to the Ramos, continue in the same flow chart if you have space over there, otherwise you can like, so we are discussing the pubis bone, right? The pubis bone, and pubis bone has two Ramos. Two Ramos, the one which I will be discussing right now beta, it is, yeah, the superior Ramos, and we have inferior Ramos. Inferior Ramos. Superior Ramos. Now beta, superior Ramos, it extends from body of iliopubic eminence. Okay, sorry, body. Okay, let me just write it down. Body till iliopubic eminence. Okay, it extends from the body till the iliopubic eminence beta. ये वाला जो पार्ट है, बॉडी का पार्ट यहाँ पे आ जाता है, तो ये वाला जो पार्ट आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है आप लोगों को, दैट इज द सुपीरियर रामस वाला पार्ट है, और नीचे इंफीरियर रामस आ जाता है, नीचे इंफीरियर रामस आ जाता है. सो रिमेंबर बेटा, इट इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम द बॉडी टू द इलियोप्यूबिक एमिनेंस. तो ये जो एमिनेंस होता है बेटा, इसको हम लोग देखो, ये ऊपर इलियम बोन है और ये प्यूबिस है, तो जहां इलियम और प्यूबिस मिल रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? इलियोप्यूबिक एमिनेंस. इलियोप्यूबिक एमिनेंस, इसको क्या बोलेंगे? इलियोप्यूबिक एमिनेंस. So remember beta, it is extends from the body till the iliopubic eminence. Iliopubic eminence. Okay. Now this superior ramus will form the acetabulum. Now can anyone tell me acetabulum? How much part will be formed by the superior ramus? Tell me. How much part will be formed by the superior ramus? I want answers in the chat box. Yes, Harsh, very good. It is forming the acetabulum. Harsh, Miracle, Kiran, Jainam, very good beta. Acetabulum, 1/5 part it is formed. Okay, 1/5 part it is formed, and it is the, yeah, 1/5 part. And remember that this superior ramus, if we take a cross section, it has 3 borders and 3 surface. 3 borders and 3 surface. Now to explain this, let us go back to this particular diagram which we have drawn. Okay, let us go back to this particular diagram which we have drawn. इसमें तो काफी mess हो गया. So yes, you can very well see beta over here. It is, yeah, having 1/5 part of the acetabulum. Yeah, 1/5 part of the acetabulum. Yes, yes. Now beta, there are 3 borders that you can see in the ramus part. There are 3 borders that you can see. Yes. Now we have this border beta, and this border, it is like above. Okay, it is extending from, okay, it is extending from the pubic tubercle. देखो pubic tubercle से extend करता हुआ, okay, it is going to the iliopubic eminence. It is going to the iliopubic eminence. Okay, so this is called as the superior border. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? superior border. और इसी superior border को हम लोग बोलते हैं pectineal line. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? pectineal line. This is called as the pectineal line. Okay, then beta, yeah, we have one border that is again extending, okay, from the yeah, pubic tubercle, from the pubic tubercle to the acetabulum. Okay, from the pubic tubercle till the acetabulum cavity, and this border, it is coming in front beta. ये आगे की तरफ आ रहा है, so this is called as the anterior border. This is called as the anterior border. Okay, and below it we have this inferior border. Inferior border. Okay, it is short and forms the, yeah, it is short. This part, it is formed, yeah, the upper part of the obturator foramen. So if you want, we'll just write it in our notes that we have 3 borders. We have 3 borders,
And if we take a cross section का मतलब है अगर मैं इसको बीच में से काट दूं, अगर मैं इसको बीच में से काट दूं, so what I will get beta over here, you already know we have, yes, we have superior, yeah, we have superior border, inferior border, okay, inferior border, we have the superior border, inferior border, and we have the anterior border, anterior border. Now between the superior border and the inferior border, we have posterior surface, or I can simply say pelvic surface, pelvic surface. Between the anterior and the inferior border, we have the obturator surface, क्योंकि वो obturator margin बनाता है, obturator surface. And between the anterior border and, yeah, the superior border, we have the anterior surface, or I can simply say the pectineal surface. Pectineal surface, or yeah, it is the anterior surface. So this is something that you have to like keep in mind. एक superior border ऊपर नीचे inferior और आगे की तरफ anterior. तो obviously बात है superior और inferior के बीच में posterior border पीछे की तरफ नीचे obturator margin बना रहा है, okay? तो obturator surface हो जाएगा. So if you just can see over here, yes. So I hope this is clear. Everyone has written this. ये लिख लिया सब लोगों ने? Yeah, can you see this inferior border? It is actually forming the obturator margin. Okay, obturator margin. I hope this is clear to everyone. Better just give me a thumbs up in the chat box if the borders and surfaces are clear of superior pubic ramus. Yes. Chalo, Ash, Harsh, very good, beta, very good. So yes, इसी में बेटा मैं लिख लेता हूँ because I am not here to like pectineal surface पर एक muscle attach होती है बेटा, that is called as pectineal or pectineal muscle. Pectineal muscle, it originates from the pectineal surface, right? Iliopubic eminence, okay, you already know the iliopubic eminence. Iliopubic eminence is psoas major, okay, psoas major muscle will originate. Psoas major muscle will originate, right? Yes. And one more, if you want to write in the body part, in the body part you can mention one more muscle beta, that there is something which is called as gracilis muscle. Okay, gracilis muscle, which arises from the lower part of pubic body, which arises from the lower part of pubic body, which arises from the lower part of the pubic body. Okay, it is actually close to pubic symphysis. It is close to pubic symphysis. I will show you the muscles also. I will show you the muscles picture also. No need to worry about that. So yeah, that was about the superior ramus, the superior ramus. Now coming on to the inferior ramus, beta. Inferior ramus basically, yeah, you already know it is joining the okay, inferior ramus of pubis. It is joining which ramus of the hip bone? Answer me question. Answer this question beta in the chat box. The inferior ramus of the pubis, it is joining with which ramus of the hip bone? Answer though. You already know this is the inferior ramus. Okay, this is the inferior ramus of the pubis. This is the inferior ramus of pubis. Now, it is joining with the inferior ramus, or ramus of which bone? It is joining with the inferior ramus of which bone, beta?
आंसर ही नहीं दे रहे हो. यस, इश्कियम बेटा, जयनाम, वेरी गुड. सो yes, inferior ramus of pubis, it is in continuation with the inferior ramus of the ischium. Yes, Harsh, Chirag, Kiran, very good. यही तो क्वेश्चन मैं पूछ रहा था. ओके, सो अगेन बेटा, दिस inferior ramus has two borders and two surface. It will be like same as that we have discussed, two borders and two surface. Two borders you already know, we have superior border and we have inferior border, and two surfaces beta, we have anterior surface and posterior surface. That is all about the ramus. That is all about the ramus beta. That is all about the ramus. That is all about the ramus. So I hope the pubis is clear, the ischium is clear beta. Just give me a thumbs up in the chat box if both the bones are clear as of now, so that I can discuss the other aspects that I wanted to discuss with you people. चलो फटाफट से हर्ष, जयनाम, किरण, बाकी सब भी आंसर्स दो बेटा. बाकी सब भी आंसर्स दे के बताओ कि तुम लोग को समझ आ गया है. चलो बाकी सब भी आंसर दो कि तुम लोग को क्लियर हो गया है. चलो किरण, वेरी गुड बेटा. यू अगेन हैव टू गो थ्रू द लेक्चर, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा. तो मेरी आदत यही होती है कि क्लास में तुम्हें थोड़ा सा 50-70% तुम्हारे माइंड में चला जाए. एक बार और लेक्चर सुन लोगे तो इट विल बी लाइक मोर क्लियर बेटा. और बेटर इट इज टू ड्रॉ इट इन अ फ्लो चार्ट. कोई भी ग्रंथ या कहानी लिखने की, थीसिस लिखने की जरूरत नहीं है. इफ आई एम ड्रॉइंग अ सिंपल फ्लो चार्ट फॉर यू पीपल, फ्लो चार्ट इज वे इनफ बेटा. उसी से याद होगा, उसी से पता चलेगा. अदरवाइज या रामश ऑफ द इश्कियम, यस, ये रहा बेटा. रामस ऑफ द इश्कियम पूछ रहे हो, मैंने रामस ऑफ द इश्कियम यहां लिख पाया है. Yes, ramus. Ramus of the ischium has again two borders and two surface. Ischium, right? Ischium भी मैंने दो slides में complete कर दिया है, ठीक है. Ischium भी I have discussed it in two slides, okay, with all the muscles and ligaments which are there over here, and pubis also I have like compiled up in like two slides. That's it. Now coming on to the acetabulum, basically beta, remember it is a cup shaped cavity. It is a cup shaped cavity. Okay, it is a cup shaped cavity on the lateral aspect of the hip. Okay, it is on the lateral aspect of hip. It is on the lateral aspect of the hip. What is the direction beta? It is directing laterally. Direction की अगर बात की जाए acetabulum की, direction it is laterally. Okay, it is laterally downwards. देखो लेटरल साइड पे है, नीचे की तरफ है और आगे की तरफ है. इट इज डाउनवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स. It is downwards and forwards. If you want a clear picture, you can just see it in this picture as well, beta. You can see it in this picture as well. You can see this is the acetabulum. Okay, this is the acetabulum. So this acetabulum, it is like on the lateral side. Okay, it is directing downwards and it is more towards the front. आगे की तरफ आ रहा है. It is more towards the front, right? So it is directed, yes, laterally downwards and forwards. Now acetabulum, it is okay. 2/5 part it is contributed by what? And 1/5 part it is contributed by which bone? So tell me. Yes, the acetabulum, okay, it is contributed by the three hip bones. So you are going to tell me 2/5, 2/5 and 1/5. कौन कौन सा बना रहा है, जल्दी से बताओ चैट बॉक्स के अंदर. The first 2/5, it is formed by the, yes, ilium and ischium 2/5. Very good, Harsh. Ilium and ischium, yeah, 2/5 and 1/5 it is formed by the pubis bone. Very good, Jainam. Very good, very good, very good. Yes, everyone is right. Yes. So yes. Now beta, you already know we have a surface. Okay, the one which I'm highlighting over here,
Okay, the one which I'm highlighting over here. Yes, you can see it over here in this picture as well. Yes, the one which I am highlighting. Okay, now see it over here, beta. The one which I am highlighting over here, this is the surface of acetabulum. This is the surface. Now this is the fossa, and below there is a notch, beta. Below there is a notch that is called as the acetabular notch. Okay, that is called as the acetabular notch. Okay, तो एक तो सरफेस प्रेजेंट है, सरफेस के अंदर क्या है, फोसा प्रेजेंट है, और फोसा के जस्ट नीचे अगर आप देखोगे तो एक नॉच देखने को मिलती है, दैट इज कॉल्ड एज द एसिटाबुलर नॉच. Okay, it is called as the acetabular notch. That is something that you have to remember, the parts of the acetabulum. The parts of the acetabulum, we have the surface, acetabular fossa, and acetabular notch. Acetabular notch, that is something you have to keep in mind. Coming on to the obturator foramen. Beta. Obturator foramen, you already know it is a large cap. Okay, it is a large cap, beta. You can see it over here. It is the large cap, okay, in the hip bone. So remember, it is a large cap. It is a large cap. Remember, it is a large cap in the hip bone. Okay, in the hip bone, and it is bounded by which bones? Now, obturator foramen, it is bounded by two bones. You are going to tell me which bones, like it is bounded by which two bones, beta? This obturator foramen, if I just want to show it up over here, this obturator foramen, it is bounded by only two bones. Can you name that, beta? Yes, this obturator foramen, it is bounded by two bones. दो bones मिलके बना रहे हैं foramen, मतलब this foramen is enclosed by the two bones. Tell me, स्क्रीन पे ही आंसर है. नहीं बेटा, इसी में चिराग बेटा, इसी में तो बताना है. जयनाम, वेरी गुड. इश्कियम एंड प्यूबिस, इश्कियम एंड प्यूबिस, फीमर तो एक एसिटाबुलम में चला गया ना ऊपर. मैं सिर्फ इसकी मार्जिन्स की बात कर रहा हूँ. मैं सिर्फ इसकी मार्जिन्स की अगर बात करूं बेटा, इट इज लाइक, इट इज बाउंडेड, या it is bounded by ischium and pubis. It is bounded by ischium and pubis. It is bounded by ischium and pubis. Yes, it is bounded by ischium and pubis. Yes. Now, yes, in the living it is incompletely closed by a membrane. Okay, that is the obturator membrane. Okay, so in the living part, it is like half of this canal, it is bounded by a membrane, and that is something which is known as the obturator membrane. That is something which is known as the obturator membrane. So yeah, muscles of the medial aspect of the thigh, I have already discussed it, beta, but once I just wanted to discuss, we have the iliacus muscle. So you already know iliacus muscle, it is present in the iliac fossa. Okay, iliacus muscle basically it is present in the iliac fossa. ये मैंने आप लोग को पढ़ा भी दिया था, iliac fossa में present होती है. So everyone can see this iliac muscle. Yes, we have the obturator internus muscle. देखो obturator internus muscle कहाँ present है? obturator margin पर present है. obturator margin पर present है. So yes, obturator internus muscle. obturator internus muscle. So remember beta, it is present around, okay, it is arising from the margins of, yes, margins of obturator foramen. Obturator foramen plus beta, you can see we have pelvic surface. मैंने बताया था pelvic surface होता है ischium and sorry, yeah, ilium and pubis. तो ये तो ऊपर वाला पार्ट देखो, ये देखो, ये भी ऑब्ट्यूरेटस इंटरनस ही है, ऑब्ट्यूरेटस इंटरनस ही है, बट ये किस बोन में आ रहा है? इट इज द इलियाक बोन. ठीक है, और ये वाला बोन क्या है? प्यूबिस. तो प्यूबिस का पेल्विक सरफेस और इलियाक का पेल्विक सरफेस, बेसिकली दे आर आल्सो गिविंग राइज टू दिस पर्टिकुलर मसल, दैट इज ऑब्ट्यूरेटस इंटरनस. सो प्लस द पेल्विक सरफेस ऑफ द इलियाक bone and pubic bone, right? Pubic bone. Okay, pubic bone. Remember beta, the third one that you have to remember, it is the levator ani muscle. Levator ani muscle, very important muscle. Levator ani muscle. And remember beta, levator ani muscle, it is
arising, so it has two fibers beta, anterior fibers एंड पोस्टीरियर फाइबर्स. एक ही मसल के दो फाइबर्स है बेटा, एक आगे से आ रहे हैं और एक पीछे से आ रहे हैं. एंटीरियर फाइबर्स आर अराइजिंग फ्रॉम द बैक ऑफ द बॉडी ऑफ प्यूबिस, फ्रॉम बैक ऑफ बॉडी ऑफ प्यूबिस, and yeah, posterior fibers are arising from the ischial spine, inner aspect of the ischial spine they are arising from. Yes, and the last one that you have to remember, it is the coccygeus muscle. I have already discussed this. It is arising from the ischial spine only. Okay, coccygeus muscle, I have already told you, it is arising from the ischial spine only, right? So yes, that is about the muscles of the medial aspect of the hip bone, muscles of the medial aspect of the hip bone. Okay, now coming on to the articulation. बेटा articulations का मतलब होता है joints. Articulations का मतलब होता है joints. So you already know the auricular surface of ilium articulates with the sacrum via sacroiliac joint. मैंने आप लोगों को बताया था ना कि yeah, you already know that this is the auricular surface. ठीक है, auricular surface of ilium. ठीक है, और साथ में क्या होता है, sacrum. अगर पिक्चर देखनी है तो you can see this picture बेटा. तो you already know कि ये sacrum bone है, ये सैक्रम बोन है, और ये इलियम बोन का वो ऑरिकुलर वाला पार्ट है. तो ये इलियम बोन और सैक्रम बोन, बेसिकली these two bones are joining, so that is something, a joint will be formed whenever two bones are joining, and that is called as the sacroiliac joint, and that is called as the sacroiliac joint, that is called as the sacroiliac joint. Yes, sacroiliac joint. The acetabulum articulates with the femur. तो मैंने आप लोग को बताया था हिप जॉइंट बन जाता है, और the two pubic bones बेटा, the right pubic bone and the left pubic bone, हजार बार डिस्कशन हो गया. pubic symphysis बनाता है, and pubic symphysis is a secondary cartilaginous joint. Why secondary? Because it is the bone is covered with hyaline cartilage, and in between we have a fibrous ligament, So that is about the articulations of the hip bone. Now coming on to the ossification centers beta. So can anyone tell me how many ossification centers are there? Can anyone tell me? So ossification center means, yeah, ossification का मतलब होता है bone formation. So we have two centers beta. We have primary centers of ossification, and we have secondary centers of ossification. So we have primary centers of ossification and we have secondary centers of ossification. So yes, primary centers, they appear in the intrauterine life. Okay, they appear in the intrauterine life. जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, ठीक है, whenever it is like inside the womb of a pregnant woman. Okay, so that time the primary centers will appear. So remember beta, one primary center will be there for ilium, one primary center will be for ilium. Okay, that is around 8 weeks of intrauterine life. Intrauterine life कहने का मतलब है when the baby is inside the uterus, intrauterine life, इसको IUL लिखते हैं. When it is inside the womb of a pregnant woman, okay, during the pregnancy period, जब 8 weeks होता है ना बेटा pregnancy के, तब ilium का center appear होता है, So remember beta, one for ilium, one for ischium, that is around the third month of intrauterine life, one for pubis, that is around fourth month of intrauterine life, okay. Now beta, these three, okay, they fuse with each other by 7 to 9 years. जब बच्चा 7 years का, 8 years का या 9 years का हो जाता है, then these three bones will fuse with each other, and they fuse with each other with the, okay, Y-shaped cartilage. मैंने ये सबको दिखाया भी है. It is a Y-shaped cartilage बेटा. It is a Y-shaped cartilage. Okay. और Y-shaped cartilage भी जो है पूरा फ्यूज, बिल्कुल पूरा एक बोन बनना,
it is around 15 to 18 years. Okay, 15 to 18 years. पहले ये तीनों बोन्स अलग अलग होते हैं, इलियम अलग होता है, इश्कियम अलग होता है, प्यूबिस अलग होता है. By 7 to 9 years basically they will be joined together and with the help of cartilage. और वो जो cartilage है it again also fuses ताकि वो बिल्कुल एक सिंगल बोन की तरह दिखाई दे, and that is around 15 to 18 years. It is 15 to 18 years. बेटा इट इज मोर देन इनफ. इतना जो मैं पढ़ा रहा हूं ना ये आपको कोई नहीं पढ़ाएगा. आई एम टेलिंग यू दिस. इवन इन द कॉलेज ऑल्सो दे विल कम एंड गिव लेक्चर. ये जो मैं पूरा एक एक पॉइंट एक एक मसल आपको दिखा रहा हूँ या एक एक जगह बता रहा हूँ कि ये बॉर्डर ये सरफेस, कोई इतने बारीकी से आप लोग को नहीं बताएगा. दे विल डायरेक्टली स्टार्ट विद द नर्व्स और आर्टरी स्टार्ट कर देते हैं. मेरा काम है क्योंकि यू ऑल आर फर्स्ट ईयर, तो मैं हमेशा बोन से स्टार्ट करता हूँ. किसी भी ऐप में कुछ भी आप लेते हो दे विल नेवर टीच यू बोन्स. ओके, और बोन्स नहीं आएंगी, मसल्स नहीं आएंगी कि मसल कहाँ पे प्रेजेंट है, आगे नर्व सप्लाई, आर्टरीज, वेन्स सब मतलब करने का कोई मतलब नहीं अगर बेसिक चीज नहीं आती. हमेशा आई ऑलवेज इंसिस्ट ऑन द फैक्ट कि आपके कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए. ठीक है, अगर मैं आपको हिप बोन दूं तो आप हिप बोन मुझे डिफाइन कर सको कि हाँ ये इलियम पार्ट, ये इश्कियम में, ये प्यूबिस है, इलियम में बॉर्डर्स होते हैं एंटीरियर, सुपीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल. तो वो सब चीजें आप मुझे अच्छे से बता सको और कहाँ पे कौन सा मसल अटैच है. तो ये सब चीजें जो है हम लोग फर्स्ट ईयर में ही पढ़ाते हैं. दिस इज लाइक मोर देन इनफ. और इतनी बारीकी से आपको पढ़ाया जा रहा है तो ये आप बार बार भी देख सकते हैं वीडियो को. और कभी भी इफ यू हैव एनी डाउट बेटा यू कैन टेक्स्ट मी एनी टाइम. यू कैन टेक्स्ट मी एनी टाइम, राइट? I will give you my number also. If you have any doubt, you can just text me anytime, right? So yes, कि सर ये चीज समझ में नहीं आई, आप एक बार दोबारा बता दो. I will explain that part, बेटा. Okay, I will explain that part, right? Now, secondary centers, बेटा, basically they appear after birth. Okay, they appear after birth. Now, secondary centers, one it is for the iliac crest. One it is for the iliac crest. Iliac crest है वो birth के बाद. Yes beta, it is your first year. You have never been in touch with anatomy in 11th and 12th. तो ये तो आपको स्टार्टिंग से ही बार बार मसल्स हो गए, लिगामेंट्स हो गए. थोड़े से नाम आई ऑल्सो एग्री कि अभी आप लोगों के लिए डिफिकल्ट है, बट द फैक्ट इज यू हैव टू लर्न इट बेटा. ओके, तो अब वो वाली चीज नहीं है. आप बोन्स अगर आप ले सकते हो, इफ यू हैव बोन्स विद यू जस्ट ट्राई टू प्रैक्टिस ऑन द बोन्स इटसेल्फ, राइट? यूनिवर्सिटी में तो आपको बोन्स मिलेंगे ही प्रैक्टिस करने के लिए. ठीक है, सो अपार्ट फ्रॉम दैट बेटा आप एक एक ऑरिजिन, इंसर्शन, ये सब पता होना चाहिए. ठीक है, पार्ट्स. सो यस, हाँ, डेली रिवीजन बहुत जरूरी है. इसलिए मैंने जो कल चीज बताई थी मैंने आज पहले वो तुम्हें रिवाइज करवाई है. I like did all the revisions which I was discussing yesterday. So yes, the secondary centers they appear after birth. Secondary centers बेटा ये वो centers हैं जो बाद में appear होते हैं और ज्यादा बोन को डेवलप करवाते हैं. Yes, और ज्यादा बोन को डेवलप करवाते हैं. Secondary centers, remember, one for iliac crest it is needed, one for anterior inferior iliac spine. Okay, yes, one for body of pubis. अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है anterior inferior iliac spine कहाँ होता है. You guys are very well aware कि ये सारे parts कहाँ पे हैं. One for body of pubis and one for ischial tuberosity. Yes, one for ischial tuberosity. Right? Now, these all appears at puberty. Okay, they all appear at puberty. And fuse with the main bone. And fuse with the main bone. Fuse with the main bone, okay, by 25 years. Fuse with the main bone by 25 years. Fuse with the main bone by 25 years. That was about the ossification centers, beta. Ischial spines are like no more like in sports injury. If you see it, like ischial spines are most likely to get fractured. So yeah, that is about the clinical aspect that I have like discussed. So yes, I hope it is clear to each one of you, beta. I hope it is clear to each one of you whatever we have discussed today, the ischium and the pubis, the ischium and the pubis. I have just
like made things very easy for you in the form of a flowchart. In the form of a flowchart, beta books एक बार पहले what I suggest everyone over here, what I will suggest all our first or second year students beta, once you go through the video again, okay, and after that try to read it from the book, okay, and see the labelings, whatever I have shown in the whatever pictures I have used over here, and try to see the atlas, anatomy atlas होगी सबके पास, वो देखो उसमें, ठीक है, and just try to learn it here. And like, because tomorrow I will be starting with the femur bone, so I want everyone ki you should be aware of all the parts of the hip bone, okay? All the muscles that I have discussed, all the ligaments that I have discussed in the hip bone, right? So yes, yes, very good. So kindly revise all these things. The hip bone anatomy, I have taken 2 classes, beta, approximately around like 4.5 hours, okay? So that I can discuss it like, देखो कंटेंट इतना नहीं है, कंटेंट इज जस्ट लाइकली 2 or 3 pages, 4 pages मैक्स, बट द पॉइंट इज कि आपको समझ में आना चाहिए. मैं ग्रेटर शियाटिक नॉच पूछूं, लेसर शियाटिक नॉच पूछूं, तो आपको पता होना चाहिए वेयर इट इज, क्या आपको पता होना चाहिए वेयर इट इज. So yes guys, thank you so much, and we will meet in the evening for the biochemistry lecture. And tomorrow we'll discuss the osteology of the femur bone. All other bones are comparatively easy as compared to this. All other bones are comparatively easy as compared to this. Yeah. So yes. Goodbye. Goodbye, beta. Sure.